Hello everyone. Today we are going to start new chapter, that is fiber to fabric. You must remember that you have read this chapter in class 6th also. There you have learned that what are fibers, what is fabric, and how fabrics are made from the yarn of the fibers. So you have read that we have two types of fibers. First is natural fiber and second is synthetic fiber. In natural fibers, you have read about that fibers are obtained from plants as well as animals. So in this chapter, we are going to read about the fibers which we obtain from animals, because the plant fibers you have read in class 6. So we will complete animal fibers in this class. The very first thing that fibers obtained from animals are actually their hair. उनके बाल होते हैं. So you can see here that this is a sheep and her hair is used as wool. So wool is obtained from sheep. So you can see that wool is obtained from the fleece of the sheep and yak. That is, fleece means hair. So we obtain fleece from the sheep or yak or other animals, and from it wool is obtained. Another fiber is silk fiber. Okay, this silk fiber is obtained from a insect which is silk moth. सिल्क मॉथ एक कीड़ा होता है जिससे सिल्क फाइबर बनता है. तो it is obtained from the cocoons of the silk moth. We will read this in detail later. So firstly we will discuss about the wool. So wool is not just obtained from sheep only. It is obtained from different animals like goat, yak and other animals. For example, here you could see pictures. This is Angora goat, this is mountain goat, then camel hair also gives us wool, yak, then llama, and then alpaca. So all these animals are the sources of wool. So you all can see that they have a thick hair on their body, and this hair or this fur is used to produce wool. Wool can be soft also, wool can be hard also. The price of the wool depends upon how soft it is and how warm it is from where it is obtained. So several breeds of sheep are used for obtaining different kinds of wool. Some gives us very good quality of wool, some gives us average quality of wool. And Tibet, Ladakh is famous for wool. Angora goat is found in Jammu and Kashmir, and goat hair से जो wool निकलता है, that is helpful in formation of pashmina shawls, which are speciality of Jammu and Kashmir. So, and this llama and alpaca are found in South America, and there also they are very famous for their wool. So you can see that at different places different animals are used for yielding wool. Then different colors are also there for wool. Okay, how wool is obtained from the sheep? The first process is rearing and breeding of the sheep. So the sheep is, rearing means पालना, breeding means और ज़्यादा नंबर को इंक्रीज करना बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर शीप. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शीप्स को पालते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनको भी पालते हैं. सो इस तरीके से ब्रीडिंग का मतलब नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं.
तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर शीप्स को पालना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। शीप्स आर हर्बीवोरस, सो दे प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, लेकिन उसके साथ में अदर important food is given to them like pulses, corn, जौर, ऑयल केक्स, जिसको खरी भी बोलते हैं। मस्टर्ड के ऑयल से जब मस्टर्ड के सीड से जब ऑयल निकाल लेते हैं उसके बाद जो सॉलिड पार्ट बचता है उसको ऑयल केक बोलते हैं। सो they all are given to the sheep for better wool. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. विंटर में sheep के हेयर को हम काटते नहीं हैं, उस टाइम पर sheep को हम पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, and rearing of the sheep happens. Next is breed. लाइक हमें किस तरह का वूल चाहिए, किस क्वालिटी का वूल चाहिए। आपने देखा होगा कोई वूल होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, एंड सम वूल आर वेरी रफ टू टच। सो द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड ऑन द शीप। तो हम शीप की अगर अच्छी क्वालिटी लेते हैं तो हमें वुल भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। सो ब्रीड्स उसी तरीके से होता है। जैसे आप डॉग्स में देखते हो ना, डॉग्स में बहुत सारे ब्रीड होते हैं। पोमेरियन होता है, देन बुलडॉग इज देयर, देन देयर आर अदर डॉग्स ऑल्सो, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसी तरीके से शीप की भी डिफरेंट ब्रीड्स आती हैं और उसी ब्रीड पर डिपेंड करता है द क्वालिटी ऑफ वूल। ओके, हियर यू कैन सी सम ब्रीड्स ऑफ द sheep. Lohi, quality of wool is very good. Then Rampur Bushire, brown fleece is there, brown color का fleece होता है। नाली, then carpet wool के लिए, carpets जो बनते हैं उनके लिए नाली का breed use होता है। मारवाड़ी is coarse wool, rough wool होता है जो कि again carpets के लिए use होता है। and Patanwadi is also a one breed. So you can see so many breeds are there and the quality of wool is different and they are found in different regions. Okay. So we do selective breeding. हमें जिस क्वालिटी की शीप की ज़रूरत है हम उस क्वालिटी के शीप के पेरेंट्स को लेते हैं और जब उनका बेबी होता है तो हमें सेम क्वालिटी मिलती है। मतलब लैम्ब, when they give birth to lamb, that lamb will be same quality as its parents. So इस तरीके से हम बेटर क्वालिटी के शीप को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल। द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी डू इज, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, जो शीप है उसकी रियरिंग ब्रीडिंग कर दी हमने, उसे अच्छा खाना खिलाया और अच्छी क्वालिटी की शीप ली हमने, तो अब हमारी शीप रेडी है वूल देने के लिए। हमने उसे अच्छे से खिलाया पिलाया और उसके हेयर्स ग्रो हो गए। नाउ व्हाट वी डू, वी रिमूव द हेयर फ्रॉम द स्किन। अब शीप की स्किन से हम हेयर को कट करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं shearing. So the cutting of hair from the skin, एक बहुत ही थिन लेयर ऑफ स्किन भी साथ में निकलती है, पूरा फर की तरह वो बाहर निकलता है, सो उसको हम कहते हैं shearing. So the removal of the fleece with a thin layer of skin is known as shearing. So तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, पहला प्रोसेस है रियरिंग एंड ब्रीडिंग, सेकेंड प्रोसेस हो गया shearing. अगर आप स्टेप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वुल देख रहे हो तो ये पहला प्रोसेस हुआ। अब they have shavers for it and sometimes blades are used for the same. Then shearing से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है, the hair grows again and the uppermost layer of the skin is dead, so they don't feel the pain. Second step, now here you can see in the diagram that all the fleece is removed. This process is known as shearing. अब जब हमने इस फर को निकाल लिया then हम उसको वॉश करेंगे और इस वॉशिंग को हम बोलते हैं scouring. So this is scouring. The step 2 is scouring.
in which the fur is washed and then it is dried in sun. So this process is known as scouring of the hairs. Next is sorting. Sorting means that we separate the hair according to their quality. अगर कोई hair है जो कि rough है उसको अलग कर देंगे, और अगर कुछ hair है जो कि soft है उसको अलग कर देंगे. तो इस तरीके से हम soft hair, rough hairs, colored hairs and white hair इनको अलग अलग रख देते हैं. Then next is if there are small fluffy fibers in the hair, they are picked out. Okay, they are removed from the fibers and the fiber is dried again. Next is, so we remove the burrs. ये नाम आपको ध्यान में रखना है, that is burrs. छोटे छोटे hairs होते हैं, उन आगे चल के उनसे थ्रेड बनाना डिफ़िकल्ट होता है, तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं और उसके बाद अगेन उसको ड्राई कर लेते हैं. अब ड्राई करने के बाद जो आपको हेयर का गुच्छा मिला है, जो आपको फाइबर मिला है, उसको हम कलर करेंगे, डाई करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जिस भी कलर के हमें रिक्वायरमेंट है. देन उसके बाद हम उसे कॉम्ब करते हैं, स्ट्रेट करते हैं एंड लॉन्ग फाइबर्स आर मेड. So these long fibers are used in sweaters and the short fibers are used in woolen clothes. So here you can see that there are long fibers which are woven and here there are machines for this purpose. So यहाँ पर आप देख रहे हो स्काउरिंग ही हो रहा है. ये मैनुअल स्काउरिंग है जिसमें कि खुद वॉश कर रहे हैं एंड दिस इज डन बाय मशीन. एंड देन यहाँ पर होता है रोलिंग ऑफ द यार्न. सो द फाइबर इज रोल्ड इनटू यार्न. फाइबर को स्ट्रेट कर लेते हैं, कॉम्ब कर लेते हैं, उसको रोल करके स्पिन करके लॉन्ग फाइबर्स बनाते हैं. लॉन्ग फाइबर्स से स्वेटर बनता है एंड शॉर्ट फाइबर्स से वुलन क्लोथ्स बनते हैं. सो दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस. समटाइम्स वुल इंडस्ट्री में एक डिजीज़ होती है. जो लोग वुल इंडस्ट्री में काम करते थे, देखा गया उनको एक डिजीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज़ नोन एज एंथ्रैक्स. एक्चुअली एंथ्रैक्स जो है वो शीप में भी पाई जाती है, लेकिन जब लोग उस शीप के साथ में काम करते हैं तो वो बैक्टीरिया लोगों को भी इन्फेक्ट करता है. एंड दिस काइंड ऑफ हैज़ार्ड्स, काम के, अगर आपके काम की वजह से आपको कोई बीमारी होती है तो हम उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स. जैसे किसी फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है और वहाँ बहुत ज़्यादा धुएं का काम हो रहा है और उससे उसको सांस की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम को हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहते हैं. तो सिमिलरली जैसे हम स्कूल में बोर्ड पर लिखते हैं, सो बोर्ड पर लिखने से चॉक डस्ट हमारे सांस से अंदर जाता है, तो उस चॉक डस्ट से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दैट विल बी नोन एज ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, क्योंकि वो काम की वजह से हो रहा है. सिमिलरली वुल इंडस्ट्री में जो डिजीज़ होती है एंथ्रैक्स, वो भी एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है एंड इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अ बैक्टीरिया. Then next we have to read silk. We will read about its cycle in the next lecture. So complete your notes, write all the steps in the formation of wool, all 6 steps, and that we will discuss silk next in the next lecture. Thank you.